Next, relatively elastic demand. Dear friends, keep in mind that relatively elastic demand is sometimes also known as just elastic demand. Means अगर आपको कोई ऐसे बोला ना कि ये डिमांड इलास्टिक है, तो you have to take it for granted that he wants to say relatively elastic demand. तो यहाँ पे I can say that price का जो change रहेगा will be small change and demand will have big change. मतलब change in demand will be greater than change in price. Symbolically, if I say change in demand will be greater than change in price. Suppose price 10% से कम हो गया, demand rises by 20%, then that is relatively elastic demand. Abhi, you can see that in this case, when we put this into the formula per 20 upon 10, we get answer is equal to 2. तो यहाँ पे आपका ED जो है will always be greater than 1. Your elasticity of demand will always be greater than 1. Further, diagrammatically if we describe, देखो P was the price where Q was the quantity demanded. अभी प्राइस क्या हो गया, कम हो गया 10% से, डिमांड 20% से बढ़ गया. तो आप देखो प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा ही नीचे लेने का है, क्वांटिटी ज्यादा राइट हैंड साइड पे ले लो. प्राइस कम होके P1 पे हो गया एंड डिमांड बढ़ के Q1 पे चला गया. When we join those points, we get one demand curve DD. Economics say it is a slightly sloping curve. It will be a slightly sloping curve. Relatively elastic demand will always be a slightly sloping demand curve. Is that okay? Now we go to the last type of elasticity of demand. That is called relatively inelastic demand. और का क्या नाम रहेगा, और क्या नाम हो सकता है, बताओ मुझको. और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का और क्या नाम हो सकता है, बताओ. जस्ट इनइलास्टिक डिमांड. एग्जैक्टली रिलेटिवली इलास्टिक का अपोजिट. मतलब यहां पे percentage change in price will be bigger than the percentage change in demand. डिमांड का चेंज स्मॉल रहेगा. मतलब suppose if the price falls by 10%, demand rises only by 5%. Then it is relatively inelastic demand. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करना, आपका
न्यूमरेटर पार्ट जो है will be less and denominator part will be less. Denominator will be more. So we get 1 upon 2, that is 0.5, which is less than 1. So in this case, you observe that the elasticity of demand will always be less than 1. You should remember that in this case, the elasticity will always be less than 1. Suppose P was the price, Q was the quantity demanded. प्राइस कम हो गया 10% से, डिमांड बढ़ गया 5% से. So we get one demand curve which is a steep sloping curve. इसका स्लोप बहुत ज्यादा होता है. It is called as steep sloping demand curve. जहां पे ED will be less than 1. Is that clear to all of you? So यहाँ पे 5 type of elasticity complete हो गए. Let us in short revise. बताओ मुझको, अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहेगा? इंफिनिटी रहेगा. वेरी गुड. एंड अगर यूनिटरी इलास्टिक रहेगा तो कोएफिशिएंट 1 रहेगा. वेरी गुड. और अगर वो इन इलास्टिक डिमांड रहेगा तो वेरी गुड, लेस देन 1 रहेगा. वेरी गुड. So are those 5 types clear to all of you? Now we go to types of elasticity. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. जहां पे फर्स्ट टाइप वी हैव इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अभी हमने जो डिस्कस किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, जो हमने
डिटेल में डिस्कस किया। उसके 5 टाइप भी हमने डिस्क्राइब किए डिटेल में। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मुझको बताओ क्या रहेगा? ईडी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और इसको मैंने आगे आपको सिंप्लीफाई करके बताया था। परसेंट डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन डेल्टा पी, और इसको अगर डेल्टा डेल्टा साथ में ले लो तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई पी अपॉन डी। ये लास्ट वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो आप। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस मोर इन डिटेल्स बिकॉज हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है। इज देयर एनीवन हु वांट्स डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर इट? Anyone who wants detailed explanation, please write yes sir. अगर किसी को चाहिए detailed explanation. Okay, fine. Nobody is writing. प्राइस इलास्टिसिटी के कितने टाइप्स हमने देखे थे? 5। अभी मैं यहाँ पे आपको पूछता हूँ, आप लोग मुझको बताओगे। When I say ED is infinite, perfectly elastic, very good. ED 0, ED 0, perfectly inelastic, very good. ED equal to 1, unitary elastic. ED greater than 1, इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इलास्टिक, एंड ED लेस देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। वो मेरे नॉलेज में ना सर के ड्रॉवर में होता है। नहीं सर, ये दोनों ना सर इधर लाके रखो। Even this we have discussed in details few minutes back. Now, second type of income elasticity of demand is income elasticity of demand. It says the degree of responsiveness of demand to the given change in income of a person is called income elasticity of demand. मतलब यहाँ पे we can see EI, आप better Y लिखना. This has been typed by my child, तो उसने EI type कर दिया है. I is not written as income. In economics, income is always presented with the word Y. Why?
Because I in economics represents investment, and thus we use Y to represent income. Now, percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. वहां पे था परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम हो जाएगा वो. इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, याद रखना. इनकम इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, elasticity will be positive. Elasticity will be positive. They, as both of them are going in the same direction. So ED will be greater than 1. ED will be greater than 1. These are called as normal products. These are called as normal products. Income increases, demand remains constant. It is called zero elastic. ED will be equal to 0. They are called necessary products. अभी जैसे मेडिसिन है, सॉल्ट है, इनकम बढ़ गया तो एक के बदले 2 गोली खाएंगे क्या हम लोग? No, it will remain constant. Zero elastic. They are necessary goods. Income increases, demand decreases. Negative elastic. ED will be less than 1. ED will be less than 1, which is related, which shows they are inferior goods. It will be called, they would be called as inferior goods. Are you understanding that concept? पहला केस मैंने बताया पॉजिटिव इलास्टिसिटी मतलब नॉर्मल गुड्स, constant zero elasticity, they are called as necessary goods, and negative elasticity, they are called as inferior goods. Are these 3 types of income elasticity clear to all of you? Do you want me to discuss that formula in detail?